नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित सभी दर्शकों को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये कार्यक्रम मूलतः रामकृष्ण मिशन के हमारे जो विद्यालय में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर है उसके पुराने छात्रों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 16 से 30 साल की उम्र के हैं और वो इस कार्यक्रम में प्रतिभागी रहेंगे। मेरे पास में अभिनव भारद्वाज बैठे हैं, ये हमारे 2016 बैच के विद्यार्थी हैं, वो भी इस कार्यक्रम मेरे साथ रहेंगे। कोविड के चलते, कोविड की महामारी की समस्या के कारण हम लोग प्रत्यक्ष रूबरू नहीं हो रहे हैं, न कि हम हर साल जैसे प्रभात फेरी में सम्मिलित होकर हो पा रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इसी कारण हमारे बहुत सारे छात्र जो बहुत दूर रहते हैं वो भी अपने घर बैठ के इसमें सम्मिलित हो पा रहे हैं। तो ये विज्ञान की बड़ी देन है, कितना भी हम लोग संकट आए विज्ञान हमको इससे बचा रहा है। और ये भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक जगत का, वो हमको मदद करेगा, लेकिन वो तब मदद कर सकता है जब हमारा आध्यात्मिक नींव अच्छी रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, 12 जनवरी युवा दिन है और स्वामी विवेकानंद जी इसी के लिए प्रयास करते हैं। संयोग की बात है कि इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, उसी समय हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो ये दोनों कार्यक्रम मिलकर हम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का योगदान बड़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी विदेशों में गए थे, विदेशों को तरक्की उन्होंने देखा। आप लोग जानते हैं कि शिकागो में स्वामी जी गए थे, लेकिन शिकागो में गए थे तो उन्होंने भाषण दिए इतने मालूम है, लेकिन उसी समय शिकागो में एक बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी लगी थी और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए स्वामी जी खुद गए थे। और तो और हम जानते हैं कि आप लोग युवा हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाने निकले थे, उसी समय जब उस समय जहाज से जाना पड़ता था, पानी के जहाज से जाना पड़ता था और उनके एक जहाज में उनके साथ जो प्रवासी के रूप में साथ में एक व्यक्ति थे जो वहां जाके विदेश से व्यापार करते थे। वो दूसरे कोई नहीं थे, जमशेद जी टाटा थे। और स्वामी जी से उनकी उससे मुलाकात हुई। उसमें स्वामी विवेकानंद जी को बहुत कुछ जानते नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उनसे अनुरोध किया कि आप तो बड़े व्यापारी हैं, बड़ा उद्योग करते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसलिए नहीं अपने उद्योग कर रहे हैं क्योंकि उद्योग में रिसर्च नहीं, अनुसंधान नहीं हो रहा है और इस तरह से काम हमको करना आना चाहिए। और आगे जाके देखते हैं कि वही जमशेद जी टाटा बंगलोर में टाटा साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं। निवेदिता से उनका पत्र होता है क्योंकि तब तक स्वामी जी इस दुनिया में नहीं रहते हैं करके सिस्टर निवेदिता से उनसे बात करती है। तो हम लोग जो अभी मेक इन इंडिया वगैरह सुन रहे हैं, उसी की शुरुआत स्वामी जी ने मानो उसी समय ही शुरू किया था। तो मैं कह रहा था कि आजादी के 75 साल आए हुए, तो ये 75वां साल है, उसको स्वामी जी का कैसे संपर्क है? स्वामी जी तो कोई स्वाधीनता संग्राम में हम देखते नहीं है। स्वामी जी कभी भी स्वाधीनता संग्राम में सीधे तौर से हम नहीं देखे स्वामी जी, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशों ने लोगों को पकड़ा, जेल में डाला, जो आजादी के आंदोलन में थे उनको, और उन सबके पास लगभग स्वामी विवेकानंद जी किताब पाई जाती थी। महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, ये अलग अलग विचारधारा के लोग स्वामी जी से प्रेरणा पाते थे, ऐसा पता चल गया बाद में। तो इस आजादी की योगदान, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कारक सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत में घूम के जब कन्याकुमारी में चले गए तो सन्यासी जैसे घूमते हैं पैदल वैसे घूमते निकले गए और वहां जाकर उन्होंने शिला जो है, पत्थर है, उसके ऊपर जहाँ माँ पार्वती एक पैर में खड़े होकर तपस्या की थी, वहां जाके स्वामी जी भी 3 दिन ध्यान किया। लेकिन आदत के अनुसार ध्यान में अपने गुरु को नहीं पाते हुए उन्होंने विगत 2-2.5 साल में भारत में घूम के जो भारत देखा था वो उनके सामने मानो चलचित्र फिल्म जैसा आ रहा था और उन्होंने देखा था कि इस देश में बहुत गरीबी है, इस लोगों को कपड़ा नहीं है, देश के लोगों को दवाई नहीं है और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो स्वामी जी तैर के गए थे उस पत्थर में 1.5-2 किलोमीटर और जब वापस आ गए तो वो बदले हुए इंसान थे, वो केवल सन्यासी नहीं थे, तो एक मातृभूमि के प्रेरित प्रेम करने वाले मातृभूमि के संतान थे। और इसीलिए स्वामी
स्वामी विवेकानंद जी ने इस भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। तो हम लोग युवाओं को स्वामी से क्या सीखना चाहिए? छोटी छोटी कहानियां होती हैं, बचपन से पढ़ते हैं, खासकर रामकृष्ण मिशन में जो हम छात्र पढ़ते हैं उनको तो ये कहानी पढ़ाई जाती है, याद नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र जाती है वैसे वैसे उस कहानी का गूढ़ अर्थ और नया अर्थ हमको मिल जाता है। हमने बचपन में एक लॉयर सीएम की कहानी सुनी, उसका हरि नाम का एक सीन था, हम लोग सब किताब में पढ़े हुए हमको याद है। क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी कहानी बताते हैं कि कोई एक शेरनी थी और वो शिकार के लिए निकली थी, और जब उसने देखा कि सामने गैया चल रही है, चुपके से देख रही थी और जोर से कूद पड़ी, उसका पैर फिसल गया, वो गिर गई। तब तक वो गैया से भाग गई, लेकिन उसके पेट में बच्चा था और उसका एक्सीडेंट हुआ और बच्चा बाहर निकल गया और वो शेरनी वहीं मर गई। दूसरे दिन वो जो किसान था, गैया चराने वाला जो था या बकरी भेड़ चराने वाला जो था, वो आ गया और उसने देखा कि एक शेर का बच्चा वहां पड़ा है। उसने उस बच्चे को अपने घर में लाया और अपने घर में रखा और वो बकरियों के साथ बड़ा हो गया। बकरियों के साथ बड़ा हो गया, तो जैसे हम लोग कोई गुजराती परिवार में, बंगाली परिवार में, बिहारी परिवार में जहाँ पैदा होते वहीं हमारी मातृभाषा होती है, वही भाषा हम सीख लेते, वैसे वो बकरियों की भाषा ही बोलने लगा, बैठा करने लगा। ये कहानी आपको सबको याद है, उसमें नहीं कुछ कहानी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बहुत दिन के बाद वहाँ दूसरा कोई शेर आ गया, उसने उसको देखा, उसको बड़ा अचंभा लगा, आश्चर्य लगा कि ये शेर का बच्चा वो बैठा कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। फिर उसने उसको पूछा, अरे तुम बैठा कर रहे हो? उससे तो बच्चा भाग नहीं रहता, लेकिन शेर ने बहुत मुश्किल से उसको पकड़ा और उसको बताया तुम तो शेर के बच्चे हो। लेकिन वो बच्चे ने कभी शेर देखा नहीं था, उसका कोई विश्वास नहीं था, और इसीलिए वो उस बच्चे को लेके तालाब में गया, वहां उसका चेहरा दिखाया, बता देखो हम दोनों एक जैसे हैं, देखो मैं कैसे दहाड़ लगा। और शेर ने दहाड़ लगाया, बच्चे ने भी दहाड़ लगाया, और उसके बीच में उसको करते करते धीरे धीरे उसके मन में आत्मविश्वास चढ़ गया। तो मैं आप लोगों को ये कहानी आपको बचपन में पढ़ी होगी, याद नहीं होगी, इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ, याद करो कि अभी हम युवा अवस्था में हैं, हम अलग अलग कॉम्पिटिशन परीक्षा दे रहे हैं, हम 12वीं के बाद क्या सोच रहे हैं, कोई लोग नौकरी खोज रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोग बहुत तैयारी करते हैं, कोचिंग क्लास में जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, सोशल साइंस बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन असल बात होती है ये सब करने के लिए हमारा आत्मविश्वास कि हम शेर के बच्चे हैं, ये हमको जब तक नहीं महसूस होगा तब तक हम खुद को भेड़ या बकरी के बच्चे समझ के डरते ही रहेंगे। सैकड़ों ऐसे हजारों उदाहरण रोज आपको यूट्यूब में मिलेंगे कि जो सामान्य परिवार के बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन वो ऊंचाई में चले गए। हम लोग हमारे देश के बड़े वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी का जीवन जानते हैं, उससे बाद भी स्टीफन हॉकिंग का एक उदाहरण जानते हैं कि कैसा था आदमी जिसके पैर नहीं चल रहे, हाथ नहीं चल रहे थे, वो दुनिया का महान वैज्ञानिक बन गया। तो उनसे लेकर समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपने को आगे बढ़ चुके हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, कौन इतिहास बनाता है? इतिहास वही चुनिंदे लोग बनाते हैं कि जिनके जीवन में ये रहस्य पता चल जाता है। इसको स्वामी जी कहते हैं डिस्कवरी। डिस्कवर का कवर है, उसको डिस्कवर निकालना है, कवर है। मानो आपने कभी अगर कहीं गुफाओं में जाओगे, अजंता एलोरा या कहीं और गुफाओं में जाओगे या कोई मूर्ति देखोगे पत्थर की, तो आप पाएंगे कि उस मूर्ति बाहर से कुछ नहीं किया हुआ है, ऊपर का निकाल दिया है। मान लीजिए कोई पत्थर दिया मूर्तिकार, तो उस मूर्तिकार को स्वामी विवेकानंद जी में देखेंगे, श्री रामकृष्ण भी देखेंगे, वो नेताजी का भी स्टैचू बना सकता है, वो उसका अंदर ही है, लेकिन उसकी नजरिया जिसकी होगी वही उसको देख सकता है। अभी आप देखेंगे कि हमारे एक छात्र हैं, उसने एक चित्र निकाला है, कोई नहीं ब्लैक बोर्ड में उसने चित्र निकाला है, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं कि इसमें स्वामी विवेकानंद जी छुपे हुए हैं। तो ये कैसा उसको करने पड़ा? एक सारा चौक से कुछ किया है और उसको डस्टर से पूछा, और उसमें उन्हें उंगली से और डस्टर से स्वामी विवेकानंद जी निकाले। तो स्वामी विवेकानंद जी ब्लैक बोर्ड में तो नहीं थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने ऊपर का निकाला, उसमें ऐड भी नहीं किया, बहुत कम ऐड किया, जोड़ा था। तो हमारा खुद का जानना, इसी को ही इस कहानी से हमको
याद रहते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि स्वामी जी कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पे विश्वास। सनातन धर्म कहता था, पुराना धर्म कहता था कि वही व्यक्ति नास्तिक है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वही व्यक्ति नास्तिक है जिसका अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। अभी आप लोग सब सपना देखते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि विदेशों में जाएंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, वहीं की शिक्षा प्राप्त करके वहीं के लोगों को सिखा देंगे। ये तो बात सही है। लोग 25, 28, 29 साल में जाते हैं और अभी आप सुनेंगे अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो मुख्य अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो बहुत सारे भारतीय हैं, उसको हमको गर्व है। लेकिन उनमें का विशेषता यह है कि उन्होंने भारत के बाद वहां जाकर वो पढ़ाई किया और वहां नौकरी कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि 29-30 साल का एक युवक स्वामी विवेकानंद के रूप में अमेरिका में जाता है, वहां सीखता नहीं है, उनको सीखने के आता है और पूरी अमेरिका उनको सिर में लेती है। हमारे आदर्श आइकॉन होते हैं वो ऐसे होने चाहिए। हम लोग किसको आदर्श मानेंगे, उसी के ऊपर ही हमारा जीवन बनेगा और हमारे जीवन से हमारा राष्ट्र आगे जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये देश आजाद हुआ 75 साल पूरा हुआ, तो आजादी तो केवल ब्रिटिशों की नहीं होगी। हम लोग आर्थिक पारतंत्र में जा सकते हैं। अभी कोरोना आ गया तो कितनी समस्या आ रही है, लेकिन हम लोग अपने देश में उसके रास्ते निकाल रहे हैं। हमने अपना वैक्सीन बना लिया, तो हमारे देश में हमने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और उससे हम जूझ रहे हैं उस लड़ाई से। तो कहने का मतलब है कि आजादी केवल अंग्रेज आते करके नहीं होती, बहुत प्रकार की आजादी होती है। उसके लिए हम लोगों को सबके लिए तैयार होना चाहिए। और ये आत्मबल, ये आत्मशिक्षा, ये जो है वो स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देता हूँ, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर यही स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना करें कि आत्मबल हमको प्राप्त हो, जिससे आगे जाके इस राष्ट्र का हम विकास करें। कभी भी फिर इस राष्ट्र किसी तरह से गुलामी में ना जाए। 75 क्या, सभी आप लोग तो बड़े रहेंगे, देखेंगे कि देश के 100 साल में देखेंगे, आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको 100 साल में देश के पूरे होकर देखेगा, तो उस समय आनंद आएगा। लेकिन आप तभी आनंद ले सकते हैं कि सचमुच आपने कुछ इस देश के लिए योगदान किया होगा। नहीं तो क्या, नहीं तो हम लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं। ये तो आप चींटी से लेकर कोई भी देखेंगे तो सब लोग वही करते हैं। लेकिन हमारा इस देश के लिए क्या योगदान है, केवल हम वर्कशॉप में मैसेज देने से होगा क्या, नहीं होगा। हम लोगों को खुद को पूछना चाहिए। हम बोलते हैं, बहुत सारे समय देखता हूँ लोग कहते हैं हमारी संस्कृति जा रही है, संस्कृति कहाँ जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि इवन गैंजेस विल गो बैक टू ग्लेशियर, गंगा नदी है वो ग्लेशियर को ऊपर भी इस देश की संस्कृति नहीं जाएगी। तो हमको उसकी डरने की बात नहीं, लेकिन संस्कृति को बचा के रखना पड़ेगा, आक्रमण नहीं होना चाहिए। तो किसी को गाली गलौज नहीं करना है। स्वामी जी सामूहिक से बात करते हैं। स्वामी ने अमेरिका में सभी धर्मों को इकट्ठा आने के लिए कहा और उसको यूनिवर्सल रिलीजन की व्याख्या दी स्वामी ने। स्वामी ने कूपमंडल मतलब कुएं का मेंढक जैसा हम नहीं रहे। कुएं का मेंढक का लगता है कि कुआं ही बड़ा है, दुनिया दिखा रही है, तो हम उससे आगे बढ़ना है। रामकृष्ण मिशन के जो छात्र है वो अवश्य युवा छात्र इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं भगवान श्री रामकृष्ण के पास प्रार्थना करता हूँ, माँ शारदा जी की प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर इस आज़ादी के पर्व को और स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय दिवस को अपने जीवन में कुछ न कुछ कृति करके मनाएंगे। मैं अभी हमारे जो भैया हैं उनको बोलता हूँ, वो भी 2 शब्द आपसे बात करेंगे और उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमारे छात्रों ने घर में बैठ के कुछ हम आपके लिए भेजा है, वो सब आप देखेंगे। धीरे धीरे हम एक रियूनियन नहीं होता है तो पुराने छात्रों को इसी माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको जिन्होंने इसमें जो सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने कुछ यहाँ भेजा है वीडियो वगैरह, उन सबको धन्यवाद देता हूँ और देखने वालों को भी आभार मानता हूँ कि आप लोग ये कार्यक्रम देखें और देश के विकास में सम्मिलित हो। नमस्कार। थैंक यू महाराज। Thank you, Maharaji, for lending me this wonderful opportunity to have a word with my friends and seniors and all my friends who have been passed through these glorious institutions. The topic of my talk is Swami Vivekananda's life and its relevance in our life.
Friends, I am the least educated person to talk about the vast ideas discussed and given by revered Swami Vivekananda ji. What I can do is to tell you what I have been through in my life and how Swamiji's life acted as a guide to be on the right track on my life. I don't know whether I have succeeded or not, but yes, as a human, I find it very satisfactory to be guided by the holy life of Swami Vivekananda ji. Friends, it's not just that the ideas were not before when Swami Vivekananda was not in the world. Yes, it was. And there were great saints who have been formulated so many pursuits, so many sets of ideas. But what had happened that has changed the total dynamics of the world? You know, he has arrived on this earth on 1869, 12 January 1869 and departed on 1902. That is, his life was very short, that is of 39 years. And during that time, our motherland was predominantly occupied by the great British Empire. But during this period also, Swami Vivekananda had not only found a way to establish himself as a world's global, not only India's, but global thinker, and formulated so many ideas that has not only been accepted or listened by the Englishmen, who at that time were very dominant and resistant in terms of accepting new ideas. What was that? And it is not that Swami Vivekananda hadn't had any unsatisfactory moment in his life. Yes, you do have. When he was struggling to collect monies to make his visit to Chicago, when the Dharma Parliament was to be there on Chicago, he struggled to collect that money which is needed to make his visit to Chicago. He made his visit to so many rajas at that time, you know. India was not unified at that time, so many riyasats were there, so many landlords and maharajas and kings were there. Swamiji had made his visit to almost all of them for asking the money. And when he was there, he was having a spiritual conversation with all of the kings. And when he was not able to, actually he was able to satisfy all of the deeds and the spiritual concept of the king. But you know that human behavior, if something is new is to be taken, we are always resilient to it. And so he has faced so many unsatisfactory results. But what stood out is Swamiji's character. He never gave up. Because his vision, his ideas was very clear. Whatever had been taught by his Guru Swami Maharaj Ramakrishna Paramahansa Dev Ji, he was very clear about that vision. And that was the guiding motto of Swami Vivekananda's life. And he was so determined. And as a result, we see the postulate that Swami Vivekananda has given in later life, that if you want to understand Gita, first strong your muscles by playing football. That means what? First learn how to believe yourself. First give a birth of a confident man of yourself. Then only you will be succeed to take the burden of those holy spiritual thoughts. Friends, whenever we are feeling low, whenever we are going through a deep and dark patches of our life, we have to just visit Swami Vivekananda's life. We have to take inspiration. How he dealt those situations. I am not telling you that you have to be Swami Vivekananda. Nobody can. He was a holy person. But what we can do, we have to take inspiration from that instances of his life. And we have to take those instances as a guiding motto in our life. Swami Vivekananda was not only a great saint, he was possessing a very sensible heart. Whatever the incidents were going on in that country, he was able to feel it. He was able to feel the pain of the poor, pain of the marginalized and exploited section of our country. That's why his vision stood out. And he was very clear. He was not only given the postulates, as so many thinkers have done at that time, but also so far to accomplish those ideas, to make it reality in the Indian society. And as a result, this institution, Ramakrishna Mission, came into existence. If you will talk about today's work and social service that is being carried out from Ramakrishna Mission, it is very impossible to summarize it in mere words. So many things, education, social work, distribution of blankets in winter relief, so many things are going on. How it is possible? It's just about that pain that Swami Vivekananda had felt in his life for the marginalized society. Now, very important thing is, what is expected from us as a youth? What we are expected to do? If we are connected with Swamiji's life, he said,
कि अगर एक स्वामी विवेकानंद चला जाएगा तो भारत की मिट्टी में हो सकती है कि हजारों स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाएंगे. But he meant to say that. He meant to say that whenever you come through his life, you have to make your surrounding clean. You have to contribute to the betterment of your society. I am not asking you, and Swami Vivekananda had never asked anyone to be such a marginalized and very vast figure in the society. What is expected to be a man first? We have to clear our characters. We have to be strong in our characteristics. And whenever we are, as a student, as a lawyer, in whichever profession we have to make our surrounding clear. We have to be very sensible. We have to possess a sensible heart and attitude to always give, not to take. We have to give back society whatever we have taken throughout these days. Lastly, the one thing that is we were able to see the poster Azadi Ka Amrit Mahotsav, and as Reverend Maharaj very correctly said, Swami Vivekananda was not directly involved in freedom struggle, but all the freedom strugglers and fighters here are very, very deep fan or followers of Swami Vivekananda. Why? You know, at that time there was two types of people. First one who was struggling to free our motherland, and second type of people were those who were dreaming when India will be free, what will be its dimension, what will be its layout, and how we mold our nation to regain our post as a world teacher. And Swami Vivekananda belongs to the second category. He has visualized India. At that time, India was not unified. I am telling it again and again. And at that time, imagining a unified India, its vision, the importance of education, the importance of women empowerment, and all those things to bring marginalized section into play, to give them a leadership role, to make them empowered. Those were the major ideas that Swami Vivekananda laid down, and on those ideas, the later government of Indian society bring up the building stones of our society, and we are yet on the process of regaining our status as a world leader. So that was the contribution of Swami Vivekananda, and for that he had contributed by bringing this holy institution into play, from where so many youth, so many children are taking character building and making education, so that whenever they are coming to the power play of this society, they can play their role very effectively. That's all. Dear friends, we all are expected to adhere those postulates, those sets of ideas formulated by Swami Vivekananda ji. And alongside, we have to visit his life. We have to take the observes from his life as a guiding motto for ourselves. In this vast, moving and changing globalized world, when all of us, actually all of us, yes, facing the mental trauma, mental stress, save lack of self-confidence like problems, we have to take those efforts as a medicine and guiding motto for ourselves. Thank you. We are living in a time when physical beauty and material wealth is all what is perceived to be needed in life. Youngsters are idealizing people who make them believe that lighting a cigarette in front of everyone would make them look cool. And drinking a premium wine is what successful people do. We are in dire need of idols whose achievements were far beyond material and physical parameters. One such personality was Swami Vivekananda, who was born on this day in the year 1863. Swami Vivekananda was a man of character. During his school time, when he was known by the name of Narendra Datta, once he was in the class of geography when his teacher said something regarding the rotation of the earth which was not correct. Narendra did not even hesitate or think twice before raising the voice and telling his teacher that he was not correct. He was even punished for doing so, but that did not change his character. Once, a street lamp fell on the head of a soldier, and Narendra and his friends were playing nearby. All other children ran away in fear, but Narendra and his friends stood there and helped him. He and his friends gave him first aid. They did what was necessary. They did what was right. The goal of Narendra's life was never to earn a lot of money or earn
material wealth. His goal was to know the reality. He wanted to know whether there is God or not. For this, he required a teacher, and he found one by the name Sri Ramakrishna Paramhans. He even dared to ask the question that whether he had seen God or not, to which his guru replied, yes. This teaches us that we should never hesitate to ask questions from our superiors. He was a patriot. When he became a saint, he decided to cover the length and breadth of India, and when he finished this, he was devastated to see that there was many problems which were there in the land. People were dying of hunger. Country was in the shackles of poverty. He wanted to know what would help him to tackle the situation. And after some days, he hit upon a plan. And the plan was to offer the West the spiritual advancements of India in exchange for its technological and industrial advancement. For that, he wanted to visit Chicago, where he thought he would deliver a speech in the Parliament of Religions. He did so. He went to Chicago, but the journey to the podium was never easy. Racism was at peak at that time, and no white could bear the sight of a non-white in front of him. Swamiji suffered a lot. He even had to sleep without food for some nights. But finally, with the help of a lady named Mrs. Hales, he was able to participate in the Parliament of Religions, and finally he delivered a powerful speech on 11th of September 1893. Swamiji went on to achieve greater heights in his life. He established Ramakrishna Mission, which even to this date serves the country in many ways. A very happy Youth Day to all of you, and on this day I request you to idealize Swami Vivekananda and learn whatever you can from his life. Thank you very much. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु जिंदगी के मंच में है गजब ये चुनौतियाँ दौड़ अनजाना कीजे नाचे सब कठपुतलियाँ कर्म करनी स्वार्थ से कर्म करनी स्वार्थ से मुक्ति माया से मिले मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद Mother. He was very fascinated of Ramayana also.
Now then, time moves on and his spirituality began to rise also. There was a time when, after that spirituality rose, he used to play meditation with his friends. One day, he was with his friends, he tried to play meditation, and then he was in deep sense of meditation. Suddenly, a cobra came from anywhere of that room, and his all friends were fascinated and feared after seeing that cobra. They used to tell Naren, Naren, run, run. But Narendranath was in deep devotion. He did not know anything. After that cobra silently moved out, his mother and father came and told him that what happened. Then Narendranath told that he did not know anything as he was feeling exceptionally blissful. Time spent on, and there was one day when he used to sleep, and then suddenly a white spot of light began to arise between his eyebrows. And after that, that white spot of light changed its hues, and that suddenly it bathed the whole body of Swamiji, which was known as Narendranath, and then he began to sleep. It happened until a sense of drowsiness came to him, and it happened every day with him. He thought that it was a normal incident, so he did not tell anyone. But one day, he told his friend that, do you feel a light coming between your eyebrows? That friend replied in the negative, and Narendranath told that I do feel. Narendranath also told him that close your eyes and be alert. Do not sleep. You will see that a huge spot of light will come under your eyebrows. It will change its hues, and it will radiantly glow and bathe your whole body in a white sense of light, and then you will fall asleep. Same which happened with Narendranath. But that boy said no, it did not happen with him. Later on, his spiritual leader also told him that, Naren, my boy, do you feel any light coming between your eyebrows? It was a long time before he used to become Swamiji. Days move on. That happened, and Swamiji was named as Vireshwar, but later after he was known as Narendranath. Narendranath was a very naughty child, which suits his character as restlessness. His mother and father tried everything to calm him, but everything went in vain. Later, his mother discovered that if she poured cold water in his head and chant Shiva Shiva Shiva, and then also if she told him that Lord Shiva will not let you come in Kailas if you do like this, he would suddenly stop his eagerness and back to his natural form. So this worked, and time passed generally. When Narendranath was a little bigger, he used to get a very high fond of monks. One day, a monk came to his house asking for alms. He had only a piece of cloth, and he gave him the piece of cloth. When his mother asked him that what did he do with that cloth, then he simply replied that he gave that cloth to that monk. After that incident, his mother locked him in a room whenever any monk used to come. But that did not stop Narendranath. He used to throw away anything possible and anything found in that room to that monk, which would give him enormous pleasing. Time spent on, just like that, and Narendranath became a little bigger. At that time, the first knowledge was at the knee of his mother. As Narendranath also told that his mother taught him alphabets and mastered him the Bengali alphabets also. It is also at the knee of his mother that he first got the teachings of the Ramayana and the Mahabharata.
and that was the time. Greetings to one and all on the 159th birth anniversary of Swami Vivekananda. I am Sohaib Akhtar, an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyamandir Katihar, and am currently pursuing undergraduate studies in law from Aligarh Muslim University. Understanding Swami Vivekananda requires a multi-dimensional approach because Swamiji was not just a monk simpliciter, but a social scientist, social reformer, a great educator, and a philosopher among many other things. Today, I wish to throw some light briefly upon Swamiji's philosophy of education. To begin with, I would first like to state how Swamiji defined education. In his words, education is the manifestation of the perfection already in man. It is a beautiful correlation of education with man's inherent perfection. Perfection in man is just like raw diamond, which needs to be cut to shine. On a similar note, a tree as big as banyan is inherent and latent in a seed of the size of a peanut. Likewise, perfection which is inherent in man needs to be manifested with education. Swamiji further distinguished education with information. In his words, if education is identical with information, the libraries are the greatest sages in the world and encyclopedias are the rishis. If so, then what is ideal education? He says, education is not filling the mind with a lot of facts. Perfecting the instrument and getting complete mastery of my own mind is the ideal education. Swamiji even gave an apt solution to the evils of caste differences by percolating education to every level. Swamiji's emphasis on education finds mention in nation building also. He says, educate and raise the masses, and thus alone a nation is possible. He further defined the characteristics of education which is needed. According to him, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Swamiji's philosophy of education can be best summarized with his following words while his stay in New York. He said, education, education, education alone. Traveling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own poor people. And I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I got. Through education comes faith in one's own self. And through faith in one's own self, the inherent Brahma is waking up in them, while the Brahma in us is gradually becoming dormant. To sum up, I would like to propose three main reasons why Swamiji was interested in education. Firstly, a practical reason to uplift the masses. Secondly, he saw education as a tool for preparation for spirituality. And thirdly, and most importantly, he saw education as a spirituality itself. According to him, he says, I look upon religion as the innermost core of education. आज भी परिभाषित है उसकी ओज भरी वाणी से निकले हुए वचन, जिसका नाम था विवेकानंद। उठो जागो सिन्हो, यही कहा था कई सदियों पहले उस महान साधु ने, जिसका नाम था विवेकानंद। तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, कहा था उस विद्वान ने, जिसका नाम था विवेकानंद। सोचो तुम कमज़ोर बनोगे, सोचो तुम कमज़ोर बनोगे, सोचो तुम महान बनोगे, कहा था उस परम ज्ञानी ने, जिसका नाम था विवेकानंद। दूसरों के लिए ही जीना है, अपने लिए जीना पशु जीवन है। जिस स्वामी ने हमें कहा था, उसका नाम था विवेकानंद।
जिसने हमें समझाया था कि ईश्वर हमारे भीतर ही है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, उसका नाम था विवेकानंद। आओ मित्रों, हम एक हों और अपनी दुर्बलता से दूर हों। हम सब मिलकर एक नए समाज, एक नए भारत का निर्माण करें। यही हमारा सच्चा नमन होगा भारत के उस महान संत को जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। माई सेल्फ प्रत्युष प्रत्यय।